व्यूवर्स जानना चाहें कि पूजा रियल लाइफ में कैसी है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट योरसेल्फ? एक्चुअली मेरी ज़िंदगी हमेशा एक खुली किताब जैसे मैंने जिया है. There's nothing about my life that's hidden. इस इंडस्ट्री में लोग अपने एज छुपाते हैं. मैंने खुल के कहा है लास्ट ईयर when I turned 40 कि I turned 40 and I was like पूजा don't say it, कोई ऐसा कहता नहीं है. लेकिन for me what is मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी ऐसे जीती हूँ. तो आई थिंक जो कुछ आपने अभी तक देखा है जो ऑन स्क्रीन नहीं है, जैसे कि जो एक्टिंग का एक रोल में नहीं है, वट एवर बीन रियलिटी दैट्स मी. वट एवर यू सीन जो खतरों के खिलाड़ी में या तो माई एक्सचेंज में या तो शायद आपने बिग बॉस में देखा होगा, दैट्स मी. हैप्पी सोल, लवेबल, अफेक्शनेट, नो नॉनसेंस, स्ट्रॉन्ग, टफ, and just happy to be on planet Earth. Okay, what are the things that you like to do basically when you want to relax yourself, when you want to unwind yourself? Oh God, relaxation के लिए इतने सारे options हैं. एक तो है of course straight away go to a spa, get a lovely massage and a scrub and a lovely tub bath with milk and honey and rose petals. That's wonderful with candles, aromatherapy candles. दूसरा चीज़ जो हम कर सकते हैं, which is my personal favorite, is come running into the room, jump on my babies and hug them and kiss them and hug them and kiss them and hug them and kiss them and hear their little laughter and squeals and giggles, and nothing is more special than that to help you relax. Just laugh so much, and laughter is the best relaxation therapy for me at least. The other thing, if my kids are not home, then my puppies. I have a lot of lovely puppies at home. तो puppies के साथ में उनको बेड पे डाल के I go under the blankets and they all jump on top of me and they lick me and things like that. It's so nice to feel so loved, and that's very relaxing and it's exhilarating. So I it's a stress buster, a huge stress buster. I love to do that. And most importantly, if I'm very very stressed or very very angry, like मैं बहुत गुस्से में हूँ और निकालना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर रिलैक्सेशन एक टेक्निक है, लेकिन रिलैक्सेशन से कभी कभी दब जाता है. अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और बाहर निकालना है तो मैं स्विमिंग के लिए जाती हूँ. पूल के डीप डाइव करके, dive really deep down into the bottom of the pool and I scream at the top of my voice. ऊपर से कुछ सुनाई नहीं देता है, you can't hear anything. And all that comes up are a few bubbles. So nobody knows what you're doing down at the bottom, but you get everything out of your system. It's amazing. Okay. As you said that you have been multitasking, you have this habit of doing 10 things at a time. So cooking की अगर बात करें तो आप कितना कुछ बनाना जानती हैं क्या डे टू डे लाइफ में? You love cooking. And what are the things that... Actually एक बहुत funny कहानी है. शादी के पहले my husband had asked me कि can you cook? तो मैंने कहा था हाँ ऑफ कोर्स आई कैन कुक. तो उन्होंने कहा आप कुछ बना के ज़रूर रखना, आज रात में आ रहा हूँ. तो आई डिड नॉट नो हाउ टू कुक, सो आई ओपन अप रेसिपी बुक्स एंड आई पुल्ड आउट 3 recipes एंड सारे के सारे डिजास्टर से. कैबेज बिकेम टू सॉगी and the fettuccine alfredo curdled really badly and the baked potatoes were absolutely kacha. Also instead of foil paper I had aluminium foil. I did not know what the aluminium foil was, so I took silver wrapping paper जो presents पे डालती है, तो वो सब चिपक गया था. So it was a disaster. Okay. So he came and I said oh my god it's a disaster. So I said उसको इतना पिलाऊंगी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि टेस्ट कैसा है, लेकिन दिख भी इतना बुरा रहा था. So it was looking so bad. So after he was totally high and he did ऐसे we managed to get him to sit on the table. नीचे उसको बिठाया, come sit, and he was extra intoxicated and I said he'll see also how bad it's looking करके एक छोटा सा कैंडल में टेबल पे रोमांस के नाम पे कि वो देख भी ना पाए कि कितना बुरा लग रहा है. He took 1 bite, he took 2 bites and he said do you mind if I don't eat anymore? So I took that as a personal challenge. उसके बाद मैंने सारे के सारे कुकिंग कोर्सेज की है. थाई, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, डिजर्ट्स, एगलेस डिजर्ट्स, मुगलाई, सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने की है. So now today I can happily say I'm a thoroughly trained cook. मैं अपने cooks को train करती हूँ. And in the Big Boss house also I was cooking a lot for everyone. They loved my Chinese in the Big Boss house. ओके. आप जैसे काफ़ी शोज़ कर चुकी हैं, अभी आप पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, तो आपको जब हॉलीडे करना होता है तो आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या होगा? Holidays actually again depend on the reason for the holiday. जैसे कि अगर मैं अपने बच्चों के साथ में जा रही हूँ तो उनके पसंद क्या है.
जैसे कि something that's child friendly, a place that has a lot of entertainment, a lot of activities, जो उनका दिल बहलाए, क्योंकि आखिर उनका फिर holiday बन जाता है. If I want to take a shopping holiday, there are different destinations for that again. You can go to Dubai, you can go to London, you can go to Italy, depends what your mood is. Romantic holiday, again, you go to the, you know, a nice beach resort somewhere or some destination thing, like again maybe Italy or maybe the Maldives, or maybe it depends what your mood is. Is the purpose of the holiday relaxation, or is your purpose fun? कभी दोस्तों के साथ में say no, let's just go and relax. That's one type of holiday. आप कहेंगे no, let's go and do something fun and sporty. तो फिर एक दूसरा किस्म का holiday हो जाता है. तो it really depends what you're in the mood for, what is the purpose of the holiday, and who you're with. Okay, great. ठीक है, अगर आपने फिल्म्स भी की हैं, रियलिटी शोज़ भी किए हैं, तो आप किस एक्टर को अपना फेवरेट कहेंगी, या समवन जिसको आप आइडलाइज करते हैं? Who I've worked with, you mean? Yeah, or you haven't worked with, कोई भी एक एक्टर. Well, my favorite actor who I've worked with would be Aamir Khan. He is fabulous. He is such a perfectionist and he's so much of fun to work with. उस वक्त जब हम जो जीता वही सिकंदर कर रहे थे, और फिर उसके बाद मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था आतंक में उनके साथ. तो ही इज़ अ डिलाइट टू वर्क विद. एक प्रोफेशनल बहुत है, एंड पूरे सेट पे मस्ती, कभी चेस, कभी हॉपिंग हो, बैटिंग हो, कभी स्टैचू, कभी मेरा जीप ब्लू करे, कोई पाउडर डाल के नींबू पानी के अंदर, कभी सीट खींच रही हूँ, मैं नीचे गिर रही हूँ बैठने के वक्त. ही वॉज ग्रेट फन टू वर्क विद. एंड somebody I haven't worked with that I have tremendous respect for professionally would be Hrithik Roshan. जो degree of professionalism and perfection, and you can see the amount of hard work that goes into each and every shot of his, each and every character of his. It's very commendable, and he's a superb dancer. Okay. Do you love watching films? अगर हाँ तो which are your favorite movies? I love watching films for sure. Recently, I think a film that's really touched me deeply would be Tare Zameen Par. I really enjoyed that film. I love Guzarish also, Hrithik's film. I think in terms of recently I got myself a 3D television, 3D Blu-ray machine and a 3D television, and I saw Final Destination 5 on it. Oh my God! I don't recommend anybody else ever do that. I was under the blanket most of the time. It's supposed to be a thriller, but it turns into a horror film when it's on 3D because the blood comes at you and everything comes at you, and it's quite an experience. It's great fun though. That was a really, oh my God, movie that I saw recently. And what else? Yeah. There's the recent ones, but my all-time favorite movies would be, of course, Jo Jeeta Wohi Sikandar, and I love Masoom, Sheikh Kapoor's Masoom, and amongst the English films, I've recently seen Eternal Sunshine of the Spotless Mind. I loved it. I love Only You with Marisa Tomei, Robert Downey Jr. I love Al Pacino films. Love The Godfather, Scarface, and Jet Li films. Huge action freak. Oh. अच्छा, one secret of yours that you would like to share with the viewers. I know secret share करने के लिए नहीं होता, but एक ऐसी बात secret share करो. Oh wow. कोई भी एक ऐसी बात आपके बारे में जो आपके fans को नहीं पता, कोई habit या anything. Okay, I have slight OCD when it comes to things being in place. So what happens is, if you ask me today for a particular letter or a particular notice or a particular pen or a particular pin or a particular safety pin, I can over the phone tell you which cupboard, which drawer, which compartment, which box. I've got a bit of an OCD regarding that. Everything has to have a place, and I have to know exactly where every single thing is placed. And if that pin is not exactly where it should be in that particular drawer, I'll go berserk. So it has to be neat and clean and compartmentalized. Everything has to have its place. Okay. So your nickname? My nickname, a lot of nicknames. Lekin people that know me till the time I was 16 call me Bui. वो बचपन का एक निकनेम है बुई, जो कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए रखा था. तो अगर कोई भी मुझे बुई कहे तो actually it's like a life buoy, like an anchor, like a support. Everyone seems to come to it for safety and for direction. So my mother used to call me that, Bui. So everyone calls me Bui. So anyone says Bui, I look around, I know कोई तो होगा जो मुझे
16 साल तक जब तक मैं 16 साल की थी तब से वो मुझे जानते हैं. Apart from that, it's Pooj and sweet other nicknames. I shall not share. आपके बच्चे क्या बुलाते हैं आपको? मम्मी, मम्मी? Yeah, they call me Mama, and sometimes Meemsa, Moomsa, Maisa, Mouse. So Okay. Sky calls me Baby Boo. ओके एक ऐसा कोई भी मोमेंट आपके लाइफ का जो आप अपने व्यूवर्स को शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, एनी मोमेंट? Two moments. One is life, one is death. I have to say, जब मेरी बेटी और बेटा जब वो पैदा हुए थे, इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट एंड आई फील सॉरी फॉर मैन, क्योंकि आदमी ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते फर्स्ट हैंड कि कितना लाइफ चेंजिंग और कितने सारे इमोशंस उभर के आते हैं उस वक्त जब एक बच्चा आपके पेट से निकल आके एक दुनिया में आ जाता है और आप उसको अपने बाहों में लेते हैं. तो दैट फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग ऑन द प्लैनेट, एंड टू हैव गिवन लाइफ एंड टू लव समथिंग सो अनकंडीशनली एंड सो कम्प्लीटली. एंड सेकेंड वुड बी डेथ. मेरी माँ जो है गुजर चुकी है. And I think it's very important for everybody out there who's listening to this to love, cherish and truly enjoy people while they're on this planet. कि जब तक आपके माँ बाप, आपके बहन, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके neighbors, आपके whoever in the world you love, say I love you to them while they're alive. Say do all the things. आपको कभी किसी के साथ डिनर पे जाना था, आप नहीं गए, अचानक वो गुजर गए, तो आपके मन में एक रिग्रेट होता है, आई शुड हैव एटलीस्ट मेट दैट पर्सन, टेकन देम आउट. शायद कि दिल की एक बात है कि बेटा मुझे इधर जाना है या ये कर लो मेरे लिए, ये सम मन की इच्छा जो होती है. Go out there and make people's wishes come true, make their dreams come true, because when they're gone, all you're left with are regrets. Just go out there, tell people you love them, tell your parents you love them. How often do we tell our parents, I really love you and thank you for everything? Go out there and say it. Any message to your fans? Well, I hope I keep entertaining you, and I really hope that in some way I am inspirational and I can take you guys on the right track, because with being a celebrity comes a lot of responsibility, and I certainly hope that in some way I've been able to change your life for the better. Terry Chakkar has recently completed 7 years, so would you like to congratulate them? Oh yes, huge congratulations, well done. It's a big deal to survive, not to survive, but to grow from strength to strength every year, which Terry Chakkar has done, and congratulations for that. Thank you.